I'm Dr. Bushra Saeed, as Dr. Atta has already introduced me. I'm working as intensivist at Children's Hospital Lahore. So the first presentation is assessment of critically ill child. Why assessment is important of the critically ill child? Because you will assess it, then you will detect it, and then you will treat that patient. So objectives of my presentation would be, we will review the anatomical and physiological differences between the pediatric and the adult patients. So this is really important because children are not small adults, they are distinct from the adult population. Then apply the direct methodology. Direct is detection, intervention, reassessment, effective communication, and the teamwork. How to recognize respiratory failure and describe the clinical features of different types of shocks. Discuss the role of the ancillary test. Discuss the role of ancillary test in the cardiopulmonary evaluation of a child. Then Pew score to detect the clinical deterioration early, and apply the ABCD systematic approach to pediatric trauma care. Discuss the early recognition and the treatment of the sepsis. So we will start with the case study. So there is an explosion that occurred in a local shopping center and resulting in multiple injuries. An ambulance arrives with two patients. The first is a 14-year-old girl who steps out of the ambulance screaming hysterically for someone to help her younger brother on the stretcher. He smells of smoke. Her clothes are ripped and she has a large, profusely bleeding laceration on her forehead. Her 8-year-old brother is unconscious with blood coming out of both ears. So who needs triage first? 8-year-old. Why 8-year-old? Because he is unconscious and there is bleeding coming out of both ears. So it means there is suspected intracranial injury to this patient. ये चल नहीं रही. ये यहाँ पे देना इसको. So 8-year-old will get triage first. ये मार्कर ये चल नहीं रहा ये वाला. So again, continuing with our study, the 8-year-old brother is tachycardic and hypotensive, and he is actively bleeding from the traumatic amputation of his right arm. His heart rate is 150 beats per minute, and the blood pressure is 70 by 30 millimeters of mercury. What is the next intervention? Next intervention क्या करेंगे इसमें हम? क्या करेंगे? Stop the bleeding. So अगर हम direct methodology को apply करेंगे तो first of all direct में diagnose करेंगे. So detection is that he is hypotensive और हम tachycardic है, hypotensive है, so he is probably in shock. Then क्या intervention करेंगे? Airway, breathing, circulation, and D for disease and exposure. What medical surgical specialties need to be involved in this patient care? So हमें vascular surgery को involve करना पड़ेगा because there is suspected traumatic amputation of his right arm. He may need intubation and there could be difficult airway. That is why we will involve the anesthetist with this. So assessment. So in this steps must be performed in parallel as part of the primary survey. So in the primary survey, you detect and then you intervene and then you reassess. So you have to do the monitoring as well as the care along with that. And these two should be done simultaneously. The CN begins at the scene of the injury and is re-evaluated continuously along the level of the care. So this is really important, re-evaluated continuously along each level of care. The traumatically injured child is treated at the closest appropriate facility. So आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है whether I can treat it और किस लेवल तक मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ और कहाँ मुझको उसको अर्ली रेफर करना होता है. Then laboratory and radiological imaging should not delay the evaluation and the initial treatment or transport of the critically ill child to the center for the appropriate definitive care. Then this is another methodology, damage control resuscitation. आपके पास patient आया है injury के साथ, so आप उसकी treatment में further damage ना करें, so you have to do the damage control resuscitation. It is a trauma strategy consisting of early hemorrhage control, permissive hypotension, further bleeding को prevent करने के लिए, and then you have to do the hemostatic resuscitation.
And DCR is focused on preventing and reversing the lethal triad of hypothermia, acidosis, and coagulopathy in the trauma patients. And this is really lethal in a patient with a trauma who is continuously bleeding. Then this is the crux of whole of this PFCCS. There are 3 steps: detection, intervention, reassessment, and there is a cycle of detection, intervention, reassessment. You detect, you intervene, reassess, and then again detection. And this cycle is strengthened by effective communication and teamwork. This is also really important. So आपकी एक टीम होगी, आपको पता है मैंने किस किस को इन्वॉल्व करना है और उसके साथ ही ये सारा cycle करेंगे. So again, rapid assessment वही है जो हम हर patient में use कर रहे होते हैं. Airway, breathing, circulation, disability, and exposure. You have to check whether the airway is maintainable or not. अगर maintainable नहीं है तो how can we maintain it? Do we need any gadgets to maintain the airway? Then you have to check for the breathing. Circulation assess करेंगे. Disability में to look for the any injury. Like in our patient, there is he is unconscious. There are chances that he has cranial injury. And then exposure, in which you disrobe the patient to look for any additional injuries to this patient. So PU score. PU score is pediatric early warning score, and these are really important scores. ये हम अपने wards में भी use कर सकते हैं. These are basically the scores to detect the early detection of any signs that can help us to diagnose the condition of the patient. So basically 3 चीजें इसमें होती हैं: cardiovascular, respiratory, and behavior. These signs are really subtle, but if there are certain changes in these signs, तो हम early injury को detect कर सकते हैं. So there are 3 things: cardiovascular, respiratory, and the behavior. The minimal score is 3, and the maximal score is minimal score is 0, and the maximal score is 3. So in the cardiovascular, you will check for capillary refill time. If the patient is pink and the capillary refill time is 1 to 2 seconds, it means the score is 0 and the patient is healthy. If the patient is pale, capillary refill time is 3 seconds, thus the score is 1. If the patient is gray and capillary refill time is 4 seconds, and the additional thing is tachycardia of 20 or above the baseline, then the score is 2. Then in the third score, gray patient will be gray, motile, capillary refill time will be more than 5 seconds. He could be tachycardic, and now the tachycardia is more than 30 above the baseline, or at the other extreme, patient could be bradycardic. Then in the respiration, you will check if the patient is within the established baseline and there are no retractions, no signs of work of breathing, and the patient is pink and room air, so score is 0. If the patient respiratory rate is more than 10 above the baseline, there are mild retractions, or the oxygen requirement is up to 2 liters per minute, or 30% FiO2 requirement, that the score is 1. If the respiratory rate is more than 20 above the baseline, there are moderate retractions. Oxygen requirement is 4 liters per minute, and the FiO2 requirement is 40%, and the score is 2. Then the third, in the respiratory rate is more than 30 above the baseline. There are severe retractions, grunting, or the patient is in the impending respiratory failure. Oxygen requirement is more than 5 liters per minute, or 50% से ज़्यादा FiO2 की requirement है, then the score is 3. In the behavior, you will check if the patient is behaving appropriately, score is 0. In the score of 1, patient will be irritable, but he will be consolable. With the score of 2, patient will be irritable, unconsolable, and he could be restless or in pain. For the score of 3, patient will be lethargic, confused, reduced response to voice and pain. So this will be the score of 3. Along with that, agar post-operative patient में there is persistent vomiting, of the patient is having repeated nebulization, like the patient of the asthma, and you are requiring repeated nebulization, then the score of 2 will be added to this patient. So हमने इसको interpret कैसे करना है? If at any point you check the baseline PU score and the score is increased more than 3 on the repeated evaluation, it means there are chances that he could deteriorate, and you have to escalate your therapy. So again, उसी तरह general assessment में most important part of the physical examination, it begins the moment the patient is seen. Then you have to check the PU score. It expedites the evaluation process. Focus on the patient's behavioral, cardiovascular, and respiratory status. And after each step, you have to ask, does this child look sick? Then general assessment continue करके you have to check the skin for mottling. Skin is warm or cold. Capillary refill time आपने check करना है. Then you have to check for the signs of the dehydration. Signs of dehydration, all of you would be knowing. Sunken fontanelle in infant, tears and mucous membrane देखनी होती है. Then you have to check for the sunken eyes and skin tenting के लिए. And in the color of the skin, you will check for central cyanosis and the ectocyanosis.
So there is difference between acrocyanosis and the central cyanosis. There could be acrocyanosis in cold weather. It could be due to respiratory pathology. But if there is central cyanosis, it means there is certain chanting going on in the heart, or there is some cyanotic heart disease present in this patient. Then you have to check the patient for the jaundice or pallor. In the breathing, you have to check for the work of breathing. Tachypnea के लिए देखना है, then you have to check for the bradypnea. So this is showing the respiratory failure, and tachypnea, if there is marked tachypnea, there could be chance impending respiratory failure. Then check for stridor and the audible wheezing. Upper airway obstruction where there could be stridor, lower airway obstruction where there would be wheezing. Then you have to check for the CNS status. CNS status you check with the GCS, but you can also check with this AVPU score. In the A patient is awake and alert. If the V responds to verbal commands, P is response only to the painful stimulus, and the U patient is unresponsive, and the sickest patient. So अगर हम वही प्यूज को दोबारा करें, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. प्यूज में बिहेवियर, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करते हैं. एट एनी पॉइंट अगर स्कोर 3 से ज्यादा है तो इट मींस यू नीड एस्केलेशन ऑफ थेरेपी फॉर दिस पेशेंट. So again, coming to a second case study, there is a 20 months old former 24 weeks premature infant with history of multiple intubations, present with another episode of croup despite respiratory syncytial virus IVIG treatment. On examination, he is pale, he is having noisy breathing, he is irritable with capillary refill time of 3 seconds, respiratory rate is 45 breaths per minute, chest X-ray is showing lungs are clear with a normal heart size. So if you say what is the Pew score of this patient? So Pew score में हमने क्या चीजें देखनी है? You have to check for the respiration, you have to check for cardiovascular system, and the third thing is you have to check for the behavior. So behavior में उसका reduced pain response है, he is irritable, so the point is 2. In the cardiovascular, capillary refill time is 3 seconds, the score is 1, and the respiratory rate is 45, which is 10 above the baseline. Baseline respiratory rate should be 35 at this age of 20 months. So the point is Pew score in this patient is 4. So what is the most likely diagnosis for this patient? Anyone? What is diagnosis for this patient? Subglottic stenosis. अभी तो patient stridor के साथ है, so again हम direct methodology को apply करेंगे. So in the direct methodology, first of all detection, this could be croup. Intervention में, then you will see will the bronchodilators be of any benefit? No, bronchodilators में benefit नहीं होंगे since there is stridor, तो upper airway obstruction is the cause. Then after that you will reassess. अगर ये patient irritable है और drowsy है, is a laryngoscopy warranted in this case? Do you want to intubate this kid? Then in the effective communication, this is also really important. You have to keep the child calm and in the position of the comfort. Okay. And this is also really important. You always have to examine the child in the position of the comfort and in calm position. And in the teamwork, you will need stabilization and skilled airway management. So if there is chances of there is stridor, there are chances there will be upper airway obstruction, there could be difficult airway, then you have to involve the other team like anesthesia वालों को आपने involve करना होता है. Now the question is, why is this patient having recurrent croup? आप लोगों ने already बता दिया है. Because of the repeated intubation, he may have supraglottic stenosis, subglottic stenosis. So few words about the subglottic stenosis. In prolonged intubation in a former premature infant, differential diagnosis is croup. Management, you have to place the child in the position of the comfort. Breathing, where you have to give oxygen to this patient and you have to notify anesthesia and the otolaryngology to secure the airway. So we will see what are the differences in the pediatric airway from the adult airway. Pediatric airway, adult airway से इस तरह से different होता है. Adult airway is cylindrical. Pediatric airway is conical in shape. So it narrows down. That is why, narrows down below the vocal cords. That is why curved endotracheal tube is preferred.
but you can also use the uncuffed tubes in children under 8 years of age, but you have to cautiously inflate the cuff to more than 20 less, approximately 20 centimeters of water. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो there are chances of necrosis और subglottic edema के chances और subglottic stenosis के chances इनमें ज़्यादा होते हैं. Then अगर आप देखें तो children has large occiput in children less than 2 years of age. तो large occiput की वजह से they tend to flex easily. That is why when you establish the airway of this patient, तो आप shoulders के नीचे कोई पैड रखते हैं ताकि उसका occiput extend रहे. They have relatively large tongue. तो जब आप laryngoscopy करने लगते हैं तो there are chances tongue will fall back and airway को obstruct करेगी. They have larger floppy epiglottis and the anteriorly placed larynx. इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? दैट इज व्हाई व्हेन यू इंटुबेट दिस पेशेंट तो आप स्ट्रेट वाला ब्लेड यूज करते हैं क्योंकि फ्लॉपी एपिग्लोटस है तो एंटीरियरली प्लेस्ड होता है तो आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं उसके साथ. हाइपोफरेंजियल टोन इज डिक्रीज, लॉस ऑफ एयरवे, पेटेंसी इन द ऑब्टेंडेड पेशेंट्स स्पेशली. So airway obstruction in children, clinical examination will help to identify. Again ये airway obstruction above the thoracic inlet होगी तो there will be stridor. अगर intrathoracic lower airway obstruction होगी तो there would be wheezing. Respiratory failure की causes क्या होंगी आपकी बुक्स में मेंशन है. Few causes में premature में apnea of prematurity हो सकती है. There could be RDS. Neonates में infectious causes predominate. Then there could be congenital airway abnormalities. Infants and toddlers में lower airway diseases like hyperreactive airway disease और asthma होते हैं. Parenchymal disorders हो सकते हैं. Upper airway obstructions हो सकती हैं. The older children have almost the same causes of respiratory failure, just like the adults. So what are the ancillary tests we can use to evaluate the respiratory distress? So these are certain tests which we can use. ABGs में आप क्या-क्या देख सकते हैं? You can check for the oxygenation and the ventilation status of the children. So you can check for the hypoxemia, you can check for hypercarbia, and you can also check for the acidosis of this patient. Pulse oximetry, it is a non-invasive measure of the oxyhemoglobin. So pulse oximetry just tells the how much amount of the hemoglobin is saturated in this patient. So monitor oxygenation in response to the treatment, and it is not a monitor of the ventilation. So pulse oximetry से आप उसकी ventilation status या carbon dioxide status का नहीं आपको idea हो सकता. Hemoglobin concentration for arterial oxygen content के लिए important होता है. Then capnography, this is really important. Capnography is a measure of exhaled carbon dioxide. आप लोगों में से capnography कितने लोगों ने use की हुई है? So capnography basically this is a module which is usually attached with the endotracheal tube के साथ attach हो जाता है. तो उसमें exhaled carbon dioxide जितनी है वो measure हो सकती है. Blood gas में arterial carbon dioxide measure होती है. This is measuring the exhaled carbon dioxide, and thus it shows the adequacy of the ventilation. तो आप blood gas ना भी कराएं तो आपको पता चल जाएगा कि patient की ventilation कैसी हो रही है with exhaled carbon dioxide. Then you can also use it for ETT placement. So अगर आपने tube डाली है, tube डालने के बाद antidal लगाएं, अगर antidal की waveform show हो रही है तो it means the tube is at the correct place. Then capnography की core significance होती है. You can measure the cardiac output of the patient with the capnography. So during CPR में especially इसकी significance होती है. You are doing the CPR and then you have to check for the effectiveness of the CPR. So अगर antidal की waveform या capnography की waveform बन रही है तो it means you are doing the effective CPR of the patient. Chest radiograph में you will look for any upper or lower airway abnormalities के लिए देख सकते हैं. Airway obstruction या compression तो नहीं है, कोई pneumonia consolidation तो नहीं है. Pneumothorax and pleural effusion भी देख सकते हैं उसमें. So circulatory system, after the respiratory system will come to the circulatory system. There are certain physiological considerations. जिस तरह respiratory anatomy different है बच्चों में as compared to adults. Similarly, there are certain circulatory significances in the patient. So पहले तो ये formula बहुत important है. Cardiac output is product of heart rate and stroke volume. So to increase the cardiac output, patient will either increase the heart rate or you have to increase the stroke volume. Stroke volume in turn depend करता है तीन चीजों पे. Preload, which is the venous rate down of the volume. Contractility, force of contraction of the heart muscles, and the third thing is afterload, the resistance against which the heart is ejected. So if you have to increase the cardiac output, you have to work on these 4 parameters on the heart rate, preload, contractility, and afterload. So basic mechanism होता क्या है? आपने देखा हुआ हार्ट फेलियर वाले पेशेंट बहुत सारे ऑलमोस्ट सब टेकिकार्डिक होते हैं. Why they are टेकिकार्डिक? जब भी हार्ट फेल हो रहा होता है, कार्डियक आउटपुट कंप्रोमाइज होता है तो बॉडी का एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि वो टेकिकार्डिया करती है ताकि उसकी कंपनसेशन में कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो सके. बच्चों में न्यूनेटल हार्ट में स्पेशली लिमिटेड रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द प्रीलोड एंड द कैटेकोलमिन.
कैटेकोलोमीन से भी टेकिकार्डिया बढ़ता है, लेकिन ऑलरेडी वो टेकिकार्डिक होते हैं, तो टेकिकार्डिया वाला रिस्पॉन्स इज नॉट दैट लिमिटेड। दूसरा, बच्चों का हार्ट थोड़ा सा स्टिफ होता है, सो यू कैन नॉट गिव अ लॉट ऑफ वॉल्यूम टू दिस पेशेंट। थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे टेकिकार्डिया से बहुत जल्दी ब्रेडिकार्डिया में प्रोग्रेस कर जाते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव इंक्रीज्ड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्पेशली इन लेस देन 1 year of age। सो इसी वजह से टेकिकार्डिक रिस्पॉन्स समटाइम्स बहुत कम आता है या बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर जाता है टुवर्ड्स द ब्रेडिकार्डिया। इसकी एक और सिग्निफिकेंस है, when you have to intubate this patient and you have to do the ETT suctioning, so there are chances आप airway को stimulate करेंगे and patient could be bradycardic, so आपने atropine अपने पास रखनी होती है before intubation for this patient। Then this is an important graph, Frank-Starling curve। ये तो physiology में सबने पढ़ा होगा। Frank-Starling curve, Frank-Starling curve is basically ventricular preload and stroke volume। So when you increase the preload or the volume, there are force of contraction of the heart muscle is increased until it reaches a certain plateau। उसके बाद further volume देने से force of contraction will not be, cardiac output will not be increased। So again, in the physiological consideration, tachycardia is the earliest indicator of increased cardiac output। अगर आपका patient tachycardic है, you always have to look patient shock में या low cardiac output में तो नहीं है। Then blood pressure varies by age, height and gender। हाइपोटेंशन अगर आपने बेड साइड पे देखनी है एंड यू डू नॉट हैव दैट चार्ट, तो आप ये फॉर्मूला से इसको कर सकते हैं। सो हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर बिलो द 5th centile is hypotension। This can be measured। Systolic blood pressure is age in years into 2 + 70। This is the 5th centile for blood pressure at any age। Similarly, mean arterial pressure, age in years into 1.5 + 40। This is the formula for the mean arterial pressure। अगर इससे कम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर आ रहे हैं तो इट मींस द पेशेंट इज हाइपोटेंसिव। सो दीज आर द फॉर्मूला यू कैन डू एट द बेड साइड। देन चिल्ड्रन कैन लूज अप टू 30% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम स्टिल हैव द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सो दिस इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। हम बेड जब भी पेशेंट की साइड पे होते हैं तो जब तक हाइपोटेंसिव नहीं होती तो हमारी ये होती नहीं कि शायद अभी ये शॉक में नहीं है। हाइपोटेंशन तब डेवलप होती है जब 30% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट। So अगर आपका पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो ऑलरेडी यू आर इन द decompensated shock, so you have to detect the shock before the onset of the hypotension in this patient। So then in the shock there are certain special circumstances which can lead to shock। Cardiogenic shock होते हैं स्पेशली certain congenital anomalies में, congenital cardiac diseases होती हैं स्पेशली cyanotic diseases में। मायोकार्डाइटिस वाले पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं विद द शॉक। सो शॉक की क्लिनिकल साइंस क्या होंगे? पेशेंट विल बी टेकिकार्डिक, हार्ट मर्मर आ सकता है उसमें, टेकिपनिक होगा, देयर विल बी क्रैकल्स इन द चेस्ट स्पेशली एट द बेसिस ऑफ द लंग्स, हेपेटोमेगली हो सकती है एंड द फेलियर टू थ्राइव। सो अगर आपका पेशेंट फेलियर टू थ्राइव के साथ भी आ रहा है तो ये भी देखो कोई कंजेंटल एनोमली तो नहीं है जिसकी वजह से वो हार्ट फेलियर में रह रहा है, दैट इज व्हाई द पेशेंट इज फेलियर टू थ्राइव। ये होते हैं एसाइनोटिक लीजन्स। देयर आर सर्टेन साइनोटिक लीजन्स होती हैं व्हिच आर डक्टल डिपेंडेंट लीजन्स इन द नियोनेट्स। कौन सी वाली लीजन्स होती हैं? जैसे सवेयर टॉफ वाले, ये टीजे वाले होते हैं। सो दे प्रेजेंट विद द कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट इज हैविंग पुअर फीडिंग, लेथार्जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसे क्रिटिकल कोऑक्टेशन का पेशेंट है, दिस इज आल्सो अ डक्ट डिपेंडेंट लीजन। सो कोऑक्टेशन में पीडीए जब तक होता है तो वो डिस्टल सप्लाई रहती है, जैसे पीडीए बंद होता है डिस्टल सप्लाई फेमरल्स में बंद हो जाती है, उस वक्त एब्सेंट फेमरल पल्सेस के साथ पेशेंट आता है, उस वक्त पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस और शॉक में आता है। डिक्रीज और एब्सेंट यूरिन आउटपुट होता है, यूजुअली ये पेशेंट साइनोस होता है। सो शॉक की डेफिनेशन many of you will be already knowing it. It is defined as a state of cardiopulmonary dysfunction that fails to provide sufficient oxygen and nutrients to meet the metabolic needs of the vital organs in the peripheral tissue. So shock is fail to provide sufficient oxygen. This is mainly important, and this is the main thing we work on the ICU, oxygen delivery, tissue oxygen delivery. हम इसके ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। We have to improve this, and then the patient will be out of the shock. तो ये चीज compensated shock होती है before the onset of the hypotension. Decompensated shock is when there is hypotension. So you have to detect the patient in the compensated shock. So again, ancillary test to evaluate the cardiovascular system. Urine catheter should be passed. Urine output is a very sensitive indicator. अगर आपका पेशेंट शॉक में है, ऑर्गन परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो रीनल परफ्यूजन यूरिन आउटपुट से असेस होती है।
सो अगर आपका पेशेंट शॉक में है, रीनल परफ्यूजन कम्प्रोमाइज है, तो यूरिन आउटपुट इसका कम्प्रोमाइज होता है, तो आपने क्लिनिकल पैरामीटर्स जो होते हैं जिसमें परफ्यूजन और सारी चीज़ों के अलावा रीनल परफ्यूजन के लिए यूरिन आउटपुट जरूर मॉनिटर करना होता है. देन यू हैव टू चेक फॉर द टोटल सीरम लैक्टेट. इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया. जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, बॉडी शिफ्ट्स टू द एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में लैक्टेट प्रोड्यूस होता है और लैक्टेट की इज अ मार्कर ऑफ शॉक. So it serves as a prognostic indicator of response to the therapy. आपने initial patient का lactate देखा, that is higher, then you start the therapy, and then you check for the level of lactate. It should fall with your therapy if you are doing the right maneuvers with the patient. तो as a prognostic therapy के तौर पे भी use कर सकते हैं. Then total serum carbon dioxide measures the severity of the metabolic acidosis. Any patient with shock will present with the metabolic acidosis. Hemoglobin concentration shock में ऐसे choose नहीं होती, especially in the हेमरेजिक शॉक्स में ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन इट shows you about the arterial oxygen content and therefore the oxygen delivery. So अगर आपका पेशेंट वैसे क्लिनिकली ठीक है लेकिन वो एनीमिक है, तो उसकी वजह से भी arterial oxygen content तो कम होगा और ऑक्सीजन डिलीवरी भी कॉम्प्रोमाइज होगी. तो इस कंडीशन में होता है. Then you have to monitor the ongoing blood loss, especially in the hemorrhagic shocks. ब्लड गैस हमने ऑलरेडी कहा कि रेस्पिरेटरी सिग्निफिकेंस भी है इसकी और वो है कार्डियोवैस्कुलर भी है. रेस्पिरेटरी में ब्लड गैस में हमने देखा वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन के लिए VBGs आर यूजफुल टू डिटेक्ट द एसिड बेस बैलेंस एंड द मिक्स्ड वेनस सैचुरेशन. सो VBG क्या होती है? जब भी ब्लड बॉडी से आर्टरी से जाता है टिश्यूज में, टिश्यू से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट होती है एंड देन द ब्लड गोज बैक इनटू द वेन. सो डिपेंड करता है टिश्यू ने जितनी ऑक्सीजन आर्टरी से एक्सट्रैक्ट करनी होती है उतनी एक्सट्रैक्ट कर लेती है, बाकी सारा ब्लड वेन में चला जाता है. So if there is somehow certain conditions होती हैं जिसमें टिश्यू बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वीनस ऑक्सीजन कम हो जाएगी. तो इसीलिए ये मिक्स वीनस सैचुरेशन होती है. मिक्स वीनस सैचुरेशन इज बेसिकली आपने VBG कराई, VBG में जो सैचुरेशन आ रही होती है ना, दैट इज मिक्स वीनस सैचुरेशन. नॉर्मल कंडीशंस में हमारी आर्टरी से जो ब्लड जाता है तो टिश्यू 20 to 25% तक एक्सट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन अगर टिश्यू शॉक में होगी तो वो 25% से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेती है. तो अगर एक पेशेंट की आर्टीरियल सैचुरेशन इज 100%, टिश्यू इज एक्सट्रैक्टिंग 25 to 30%, तो वेन की सैचुरेशन कितनी होनी चाहिए? 70 to 75%. बट इफ समहाउ टिश्यू इज एक्सट्रैक्टिंग 40%, तो फिर वेन की सैचुरेशन कितनी रह जाएगी? 60%. सो दिस इज द शोइंग द सिग्निफिकेंस. जहां पे मिक्स वीनस सैचुरेशन लो हो रही है, देन यू हैव टू चेक कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मिक्स वीनस सैचुरेशन कम आ रही है उस पेशेंट. आर्टीरियल लाइन स्पेशली इन एरियाज जहाँ पे इन्वेजिव मॉनिटरिंग अवेलेबल होती है, इट हेल्प्स टू अलाउस द ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. अगर आपने आइनोटोपी एंड वेसोप्रेसर थेरेपी पे है, देन यू शुड मॉनिटर दिस पेशेंट विद आर्टीरियल लाइन. इट फैसिलिटेट्स द आर्टीरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग. तो आर सैम्पलिंग के लिए भी यूज हो सकती है. देन वेव फॉर्म एनालिसिस भी आपको बताती है अबाउट द कार्डियक आउटपुट, द SVR. सो इट इज प्रेफरेबल जहाँ पे आप आइनोटोप्स यूज करें, यू शुड यूज द आर्टीरियल लाइन बिकॉज ये एक्यूरेट मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर देती हैं. ब्लड प्रेशर नॉन इन्वेजिव से ना उसमें डिस्क्रिपेंसी भी आ जाती है. देन CVP भी मॉनिटर कर सकते हैं. CVP होती है सेंट्रल वीनस प्रेशर है, दिस इज शोइंग द वीनस प्रेशर. तो हम किसी बड़ी वेन में डालते हैं लाइक इंटरनल जुगुलर वेन में, तो ये आपको गाइड करती है वीनस प्रेशर में. अगर आपके पेशेंट का वीनस रिटर्न कम है या पेशेंट हाइपोवोलेमिक है तो वीनस प्रेशर विल बी लो, तो ये गाइड करती है आपको प्री लोड एंड फ्लूइड थेरेपी के लिए. If there is CVP is increased, then you check for the what are the causes of the CVP increase. तो certain type of obstructive shocks होते हैं, like टेम्पनार्ड में पेशेंट है तो उसमें CVP बढ़ना शुरू हो जाएगी. It also helpful in estimating the mixed venous oxygen saturation. चेस्ट एक्सरे में you will check for the congestive heart failure, pleural effusion के लिए, कार्डियोमेगली के लिए, पल्मोनरी एडिमा के लिए देखेंगे. Then echocardiography, ये बेसिकली डायग्नोस्टिक होता है स्पेशली इन द पेशेंट्स विद द कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस. अगर मायोकार्डाइटिस है तो यू कैन चेक फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर्स के लिए देख सकते हैं. देन यू कैन चेक फॉर द चैम्बर साइज एंड वॉल थिकनेस के लिए देख सकते हैं. कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज की देख सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो चेक फॉर द पेरिकार्डियल effusion in the patient. So coming to our third case study, this is a 5-year-old boy who is confused. So CNS is confused with 5-day history of fever, redness and swelling of the left knee. His heart rate is 180 beats per minute. तो ये high है इसके लिए. Respiratory rate is 15 breaths per minute. Blood pressure is 80/20. Temperature is 39 degrees centigrade or 102 Fahrenheit. Saturation is 95% or no mere. He has warm skin, bounding pulses. Typically refill time is 1 to 2 seconds. He is on IV ceftriaxone and acetaminophen that was administered in the emergency department. So इसका Pew score क्या होगा? सबसे पहले तो बिहेवियर में वो कंफ्यूज है.
So behavior score 3 होगा उसका. Cardiovascular में heart rate इसका 180 है, 20 above the baseline तो 2 score है. Respiratory rate is 15, more than 5 above the baseline, and 3 इसका point होता है. So what is the patient physiological state and diagnosis? अब बताएं इसके physiological state क्या है? What is the diagnosis for this patient? So patient is in shock. What type of shock is this? So this could be warm septic shock. And the second thing is it compensated or decompensated? So patient is hypotensive. So this is warm decompensated shock. This could be due to septic joint. So what respiratory and circulatory interventions are needed in this patient? Fluid resuscitation. The point is that you have to first detect, then you have to intervene. So as your patient is confused or drowsy, तो आपने सबसे पहले उसका airway maintain करना है, then you have to check for the breathing, then you have to check for the circulation. So stepwise in this. So detection में हमने देख लिया, patient is in the warm shock. Intervention में you will intubate and mechanically ventilate. You can give the isotonic fluid boluses 20 ml per kg. अगर उससे response नहीं करा, then you can give the vasopressor infusion. Reassessment में you will check for the mental status after fluid boluses, blood pressure, heart rate, capillary refill time और urine output. तो आप हर इंटरवेंशन के बाद ये देखेंगे कि इसके बाद पेशेंट का स्टेटस कैसे इंप्रूव है. आपने वॉल्यूम दिया है तो उसके बाद मेंटल स्टेटस इंप्रूव हुआ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर इंप्रूव हुआ है कि नहीं. अगर वॉल्यूम से ब्लड प्रेशर इंप्रूव नहीं हुए देन और कैपिलरी रिफिल टाइम इंप्रूव हुआ, देन यू हैव टू स्टार्ट द वेसोप्रेसर इन्फ्यूजन. सो डिटेक्शन, इंटरवेंशन, रीअसेसमेंट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, आपने प्रोग्रेसिव शॉक को अवॉइड करना है, फ्लूइड रिससिटेशन करनी है. प्रोग्रेसिव शॉक को कैसे अवॉइड करना है, यू आर गिविंग द वॉल्यूम और आप ये रीअसेस नहीं करें कि वॉल्यूम देने के बाद हर बार इफेक्ट क्या हो रहा है, वो टेकिकार्डिया वर्सन तो नहीं होता जा रहा, तो इसका मतलब वो कार्डियोजेनिक शॉक पे तो नहीं जा रहा. देन किस वक्त आपने वेसोप्रेसर स्टार्ट करनी है. टीम वर्क में अगेन इंट्यूबेशन, आर्टीरियल सीवीपी की एक्सेस है तो आपको जरूर जिसकी भी नीड है यू हैव टू डू दिस. और अगर वो सेप्टिक ज्वाइंट है तो यू हैव टू इन्वॉल्व द ऑर्थोपेडिक वैल्यूएशन. So this summarizes my presentation on assessment of critically ill child. So key points हमारे थे, you have to use the direct principles of the rapid assessment, detection, intervention, reassessment, effective communication and teamwork. This will be repeated again and again throughout the presentations. तो ये तो अपने mind में रख लें. Then you should use the pediatric early warning scores. It evaluates the behavior, cardiovascular and the respiratory status. So these are the 3 key systems जिन पे आपने keen eye रखनी होती है. Then pulse oximetry monitors the oxygenation status. It does not show the ventilation status. Capnography can monitor the ventilation status. Tachycardia and tachypnea are the early signs of the circulatory and the respiratory failure. तो अगर आपका पेशेंट tachycardic हो रहा है तो आपने उसी वक्त अलर्ट हो जाना है. There could be something wrong with this patient. Then a toxic appearing child is usually a critically ill child. So इसका behavior is also very important. जहाँ भी वो toxic appearing है तो इसका मतलब he could be a critically ill child. Child's perfusion is best assessed by mental status, capillary refill time, urine output, temperature of the extremities. So इनमें से हम capillary refill time, pulses perfusion देख लेते हैं. हम ये 2 चीजों को ignore कर जाते हैं. Mental status and the urine output. You also have to check these things for the perfusion of the patient. And do not wait for the hypotension to set in. Hypotension is a late finding of the shock. Children should be examined in their position of the comfort. Early signs of the respiratory distress may include tachypnea, grunting, retractions, and nasal flaring. Timely recognition and the aggressive intervention are essential for the optimal outcome. Thank you. Any questions?